regarding that. Good morning, students. This is Bharat Bhushan Chemistry PGT, and today I am going to teach you the chapter number 3 of the 11th class, that is periodic classification. And in this chapter, what we are going to study, that is what is the mode of classification and what is the need of classification, what are the different properties of the elements through which we can study about the detail of that particular elements and the compound. Okay, so let's start the chapter, the periodic classification. What is that? Basically, I started the chapter number 3. I think that was in the syllabus, periodic classification. Periodic classification. This is the topic. Now, I explain about the syllabus of that particular chapter. In this chapter, you will understand about the modern long form of periodic table. Modern long form of periodic table. And then after you will study the topic periodicity. This is the topic basically. And what I taught in modern long form periodic table, I have started. In that particular topic, I had taught about the Mosley's periodic table. Because modern long form of periodic table is made up with 3 different scientists, that is Henry Moseley and Bohr's periodic table also, and Simon's periodic table. These are the 3 contributions of different periodic table, and combinedly this periodic table is called modern long form of periodic table. Okay. The first one is Moseley's. Moseley's arranged all the elements according to their increasing order of the atomic number. That means properties of elements are the periodic function of the atomic number based on atomic number. This is the basic of Moseley's periodic table. He arranged all the elements into 7 periods and 18 group, including inert gas group also, right? And he separated 2 important series of the elements, that is called lanthanoid series. Lanthanoid series and actinoid series. Yesterday, I also discussed the modern long form of framework of the modern long form of periodic table. What is that? That was like that. कुछ इस तरीके से दिखता है periodic table, modern long form of periodic table. And bottom पे वो series होंगे 14 elements का. That I discussed. 1 or 2 group is there. 3 to 12 group at the depression, and group number 13 to 18 at the top again. This is also called S block. This is called D block. And this is called F block. And this is, sorry, P block. And this is F block. These are the framework of the modern long form of periodic table that I had discussed. Okay. This is the main part. Now, we are going for the Bohr's periodic table. What are the basic of the Bohr's periodic table? Then I'll explain about the Siemens periodic table.
and then combinedly called modern long form of periodic table. Just take the screenshot every time. Okay, done. And रेस कर देना अगर हो जाए तो. Okay. Is there any confusion till now? Anyone can raise their hand. हाथ खड़ा कर सकते हैं. Use, open your video first. Yes. बताइए. सर जो आपने मॉसलेस पीरियोडिक टेबल में थर्ड पॉइंट लिखा है ये नहीं समझ आ रहा. मॉसलेस पीरियोडिक टेबल में लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, इसके बारे में बता देता हूँ. मॉसलेस remove the 14 set of 14 elements, two sets of 14 elements from the main body of the periodic table. उससे बाहर कर दिया उसने, और उसका नाम एक 14 सीरीज को रखा लैंथेनॉइड और एक को एक्टिनॉइड. अब क्यों बाहर किया इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको कि ऐसे करने की जरूरत क्यों हुई, क्या जरूरत थी इसकी, उसके बारे में बता देता हूँ. यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इस जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं दूसरा कलर से हाईलाइट कर देता हूँ. सो दैट इट इज द थर्ड group I am talking about, third group and sixth and seventh period. सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड और थर्ड ग्रुप के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर और भी पीरियड होता है थर्ड ग्रुप में, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पर जगह कम था इस वजह से. सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में आप देखोगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है उसमें 14 elements are present in the same group and same period, and another 14 elements are present in the same group and same period. और वो 14 elements कहाँ से कहाँ तक है? The first series start from 58 atomic number to 71 atomic number, cerium to lutetium. These elements has similar property. That's why this is removed from the main body of the periodic table. और उस 14 एलिमेंट्स को अलग करके एक सीरीज बना दिया गया, उसका नाम रखा लैंथेनाइड. एंड देन अनदर 14 सेट्स, द एटॉमिक नंबर 90 to 103. The name of the element is thorium to unyttrium. This is the another. This is called actinoid series. This is actinoid and this is lanthanide. नाम क्यों रखा actinoid and lanthanide? Because before that, atomic number 57, the name of the element is lanthanum, and before that, name of the atomic number 89, the name of the element is called actinium. Atomic number 89, actinium, and atomic number 57, lanthanum. Lanthanum. That's why elements after lanthanum is called lanthanoid, and elements after actinium is called actinoid. That's why this is called so lanthanide series and actinoid series. Anyone? Anything else? Okay, no problem. Moving forward, next बढ़ते हैं हम बोर्स पीरियोडिक टेबल की तरफ. मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, जो आपके बुक में नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड. बोर्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज दैट? Niels Bohr arranged all the element or classify all the element on the scale of their electronic configuration. The scale of Bohr's periodic table is electronic configuration, right? How we classify? The first is S block element. What is the properties of S block element, and where are these elements? It includes first and second group. It includes first and second group, right? These are also called
alkali metal group or reactive metal, alkali metal group or alkaline earth metal group. Alkali metal and alkaline earth metal. These are very reactive. What is the property of this group? The property of this group is basically last electron goes into s orbital according to electronic configuration. That's why this is considered as s block elements, right? General electronic configuration. 1 minute, Anya, I'm taking. General electronic configuration is NS122. What is the meaning of general electronic configuration? Meaning of this is, if you do the electronic configuration of s block element, the last orbital will be like that. This kind of electronic configuration NS122. This is all about that. Yes, Anya Jain. सर सेकंड पॉइंट में Video on करो. अल्कलाइन Video मेटल के on करो. बाद क्या है? Video on करो. Yes. सेकंड Second पॉइंट में अल्कलाइन मेटल के बाद क्या है? alkaline metal and alkaline earth metal. सर दोनों का मतलब बीच में और आएगा ना? दोनों का मतलब सेम ही है. नहीं, दोनों का मतलब सेम नहीं है. And अलग अलग है दोनों. हाँ, this is and. दो ग्रुप है, एक ग्रुप को कहते हैं alkaline metal, second group is called alkaline earth metal. और सर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा है? NS1-2. 122, not 1 minus 2, 122. ओके. Yes, और Kassis. सर लास्ट आप डाउट क्लास ले रहे थे तो मेरा लास्ट फर्स्ट वाला डाउट था. ग्रुप होता है वो तो एल्कली मेटल होता है ना, एल्कलाइन थोड़ी होता है फर्स्ट वाला. This is all called alkaline metal or alkali metal, both. You can say both. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर लास्ट डाउट क्लास में मेरा एक डाउट रह गया था. मैंने कहा था कि आप एक बारी कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा दो, बट मीटिंग एंड हो गई थी. अच्छा, तो वो एक्स्ट्रा क्लास में होगा बेटा. सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख लेना, उसमें करूंगा. ओके सर. Yes, Paras. What is the problem? सर मैंने हैंड रेज नहीं किया. Okay. Okay, now this is all about that. Let's see example. Example से समझ लेते हैं इसमें कौन-कौन सा example है. Let's see, we have potassium. Atomic number 19. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. This is the configuration of the potassium. Here is the 4s1. See this configuration last 4s1, that is ns1. And the general configuration of S block should be NS122. It could be 1 or 2, anything. If they take example of calcium, atomic number 20, the same configuration 1s2, start with that, and last will be 4s2. This is the NS2, example of NS2. That means what? S block element have either configuration NS1 or NS2. That's why here is written NS122. This is called general configuration. Yeah, general electronic configuration. Right? Okay. Just take the screenshot. Done. Okay. Then proceed for the second.
second classification of the course, that is P block. And what is P block? Before proceeding P block, let me explain the elements on the S block. उसके बाद हम बात करते हैं P block का. S block में जो elements है, कौन कौन से हैं? First group, this is also called alkaline metal या alkali metal, कुछ भी कह सकते हो. Alkaline metal or alkali metal. The elements are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. These are the different elements. And here is the francium is radioactive element. Same as second group. Second group is called alkaline earth metal group. Alkaline earth metal. The elements are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. And again, radium is radioactive. अगर किसी का नाम नहीं पता तो आप लिखवा लेना. This is radioactive. Radioactive elements are those elements which starts nuclear reaction at any condition. These are called radioactive elements. And these elements are used in the nuclear power project or nuclear reactor, you can say. These are the different elements of the S block. All elements are very, very reactive. Very, very reactive. These elements are very soft. If you're talking about the first group, and since these are the very reactive, that's why these these are too much reactive that at room temperature it catches the atmospheric water and reacts vigorously. Atmosphere से water या oxygen trap करके जलना शुरू हो जाता है. That's why these are kept inside the kerosene iron. These are so soft it can be cut with a knife. These are the extra knowledge you can write. Now moving forward, the P block. P block, last electron goes into P subcell. Last electron goes into P subcell or P orbital, you can say anything. It includes group number 13 to 18. Okay. Now next one is अन्य वीडियो ऑन करके. जो भी हैंड रेस करोगे वीडियो आपका ऑन रहना चाहिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको. यस सर आपने लास्ट एलिमेंट जो एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लास्ट एलिमेंट में आरए क्यों लिखा है, उसका मतलब? Ra is radium elements is radium. Here is Ra in radioactive elements is, there are two types of the reaction. The one is the chemical reaction and second is the nuclear reaction. The radioactive elements starts nuclear reaction automatically. There is no condition for that. Those elements are called radioactive. This is another topic you can understand well in the extra class in detail. Group number 13 to 18. These are the different. And next one, it includes metal, non-metal, and metalloids. Also, there are all three types of element present in the P block. General electronic configuration or general configuration, you can say NS2, NP126. Either it could be NS2, NP1, NP2, NP3, like that. Okay. These are the different part.
Now, what are the different elements in that? Let's see, look. Take the screenshot, Kasis. Done. Okay. Now, elements are these. Group number 13, 14, 15, 16, 17, and 18. These are the different group of the P block. The first element of the 13 is boron, aluminium, gallium, indium, or thallium. The second one is carbon, silicon, germanium, Sn, and Pb. And 15th group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Group number 16, it is oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Group number 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine, or astatine. And 18, neon, argon, krypton, xenon, and radon. Group number 18 also includes the helium, but this is not a part of the P block. Although this is in the 18th group element, but this is not part of P block because last electron not goes in the P subcell of the helium atom. That's why it is not considered as the P block element. That's why not written here. These are the different elements, right? And in that particular elements, there are different, if you put the diagonal like this, there are different metalloids in that. Diagonal बना दो एक metalloids उसके around metalloids आपको मिल जाएगा like boron, silicon, germanium, like Sn, ASSB, ACT. These are the metalloids, and then iodine also. These are the different metalloids. इस diagonal के ऊपर जो भी है, these are the metal, sorry, non-metal, और उसके नीचे जो है वो these are the metal. लेकिन उस diagonal के बीच में जो include होता है, these are the metalloids. Yes, Divesh. सर हमें पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं ये याद करने हैं कि कौन से नहीं, एक भी नहीं याद करने. लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको याद आए. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बस इस अटेंडेंस का भी अटेंडेंस ले लेना. स्क्रीनशॉट अटेंडेंस 2 बार होगा, इनिशियल और लास्ट. टाइम इज ओवर नाउ. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. फिर आपका सेकंड क्लास है 10 आई थिंक 10:20 पे, उस पर हम बात करेंगे. डन. Okay. Okay, let's start. The topic is, in the previous class, I discussed about the classification on the basis of Bohr's, that is electronic configuration, basis of the classification on the basis of the electronic configuration, that is called Bohr's classification. And I did, and that particular topic is S block element. And then after, we explain each and every properties of the S block. The second, then after we discussed about the P block element. P block elements includes all metal, non-metal, as well as the metalloids also.
there are only 6 metalloids present in entire periodic table. Rest of the non-metal and metal. Approximately 88 to 89% of the periodic table occupied by the metal. Because non-metal, except if you consider as a hydrogen in the S block element, otherwise non-metal present only in the P block element. Hydrogen and helium are of the S block element. There is no any non-metal and metal. Sorry guys, little bit some network glitch from my side. That's why I left. Okay, Divesh. पारस क्या कहना चाह रहे हो? यस पारस, अनम्यूट करो. सर मैं कह रहा हूँ कि आपकी वॉइस नहीं आ रही थी सर, बीच में ब्रेक हो रही थी सर, एक Okay, बार हाँ, रिपीट कुछ- कर दो. हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ. कुछ network issue है due to some electricity glitch. That's why I am facing today lot of problem. Okay, I discussed about the S block element, and then after second P block element. In P block element, metal, non-metal and metalloids all are present. Metal, non-metal and metalloids all are present. But remember, except hydrogen and helium, if you consider about the non-metal, except hydrogen and helium, all the non-metals are present in P block only. All metalloids are present in P block only. The non-metal and metalloids are not in rest any other block. If you consider entire periodic table, approximately 88 to 89% are metal only. Right? Now, proceeding further, D block. और मैंने उसमें सब में आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज बता चुका हूं. If you think about the D block elements, last electron goes into D orbital. I am talking about the electronic configuration. If you write the electronic configuration of any of the element of the D block, you see last electron goes into D. General electronic configuration is, general configuration will be NS2 n-1 D 1 to 10. This is the general electronic configuration. Sorry guys, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ due to network issue. There are a lot of network issue in there, my area. कशिश क्या फर्स्ट पीरियड में भी प्रॉब्लम थी क्या? फर्स्ट क्लास में उस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही थी क्या? दिवेश? नो. नो सर, अभी अभी हो रहा है. Have to. No issue. Yes, पारस, क्या कहना चाह रहे हो? सर पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 n-1 P126 है या फिर n P126 है? Only N. Only N. That सर one. S की भी और P की भी? Yes, yes. उसमें n-1 नहीं होगा. ओके सर. Only D block में n-1 होगा.
only D block. NS2 N-1 D 1 to 10. This is the D block configuration. D block is yes, Anya. Yes, बोलो. सर डी ब्लॉक फिर से करा दो, आपकी वॉइस ग्लिच हो रही थी. हाँ, फिर से मैं करवा रहा हूँ. Yes, कशिश. क्या कह रहे हो? मैं यही कह रही थी कि आपको पिछली बार नेटवर्क कनेक्शन हो जाए तो डी ब्लॉक स्टार्टिंग से करवा दो. ओके. डी ब्लॉक में मैंने ये बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन goes into d orbital. The first point. Second point is general electronic configuration is ns2 n-1 d1 to 10. It includes group number 3rd to 12th. Then after, all are metal. सबके सब metal है. Now, let's see example. कोई भी example ले सकते हो. If you have the chromium or manganese, कुछ भी ले सकते हो. Atomic number 25. Electronic configuration 1s2 से start करो. But that will end at 4s2 3d5. This is the configuration of manganese. Last electron goes into 3d. That's why manganese belongs to the d block element. और आपको ये पता है कि उसका पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं, तो you can also exactly identify whether the manganese is present in which group and which period. तो आपको पता चल जाएगा उसी फॉर्मूले से जो मैंने बताया था आपको. This is all about the d block. D block elements is also called transition metal. Transition metal, and this is called outer transition metal. Outer transition. What is the meaning of transition? Transition means what? Transition of means change in energy. Transition means whenever electron goes from one cell to another cell. जो मैंने आपको बात किया था बोर्स पीरियोडिक टेबल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज चेंजेस देयर orbitals, or sorry cell. At that time orbital is not known, but cell, एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तभी एनर्जी चेंज होता है. That process is called transition, and any atom could be taken as a transition metal by particular condition whenever you provide the energy. But whenever any element did their transition process at the room temperature only, automatically that elements are considered as the transition metal. And what is the meaning of outer transition? Whenever transition takes place, one cell to another cell, this is called outer, and another is inner transition element. The inner transition element means what? Whenever transition takes place within the cell but different subcell, the cell number will be same, the subcell number will be different, but transition takes place. That is called inner transition, like F block element. This is called outer transition. But for doing transition, this is the one thing, remember, you have to understand well, that is, for doing transition, the element should have unpaired electron or should have vacant orbital. Like for transition, their configuration should be 1 to 9. In every d block element, except some exception like chromium and copper, every d block element has completely filled 4s orbital, 4s2. But what about 3d or 4d or 5d? This could be 1 to 9, 1 to 10. It could be d0 also, it could be d10 also. But if you consider as a d10, then what will happen? All electrons are in paired form, so transition is not possible at room temperature. So that's why
those elements which has D10 configuration are not considered as the transition metal. That's why configuration for doing transition is D1 to 9. There is one question in 11th as well as 12th also came. The most beautiful question is that why zinc, cadmium and mercury are not considered as transition metal. This is most important part, because zinc, if you draw the configuration of zinc, cadmium and mercury, you will see the entire zinc, cadmium and mercury has the D10 configuration. And if D10 configuration there is no possibility to do the transition at the room temperature. रूम टेम्परेचर पे अपने आप नहीं करेगा, बिकॉज रूम टेम्परेचर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही इसी कंडीशन में हो सकता है, राइट? अन्य बोलिए क्या चाहते हैं आप? सर क्वेश्चन रिपीट करना, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। वाई जिंक, कैडमियम, Zn, Cd and Hg, zinc, cadmium and mercury, Zn, Cd and Hg are not considered as transition metal? This is the question. आंसर आपको समझ में आ गया ना, क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? बिकॉज all three elements has D10 configuration, that's why these are not considered. और ट्रांजिशन के लिए D1 to 9 चाहिए. Okay, Divesh, have you understand or not? Yes, sir. Divesh, one thing, why D block element is called outer transition? Explain. What, sir? Why D block element is called outer transition element? There is Sir, written outer. D block elements are known as transition elements because sir उनके जो D सबशेल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, एंड सर जिंक, कैडमियम और मरकरी में जो D सबशेल है उसमें D10 आता है, तो इसलिए सर उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते क्योंकि उनमें नोबल गैस की आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन। दिवेश, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को क्यों नहीं कंसीडर करते। माय क्वेश्चन इज व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट? माय क्वेश्चन इज दिस। सर आई थिंक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी सबशेल। No. I am repeating again this topic. Actually, D block element is called transition element because generally D block element do the transition at the room temperature only. That means shifting of electron takes place at the room temperature with their own. There is no any external circumstances or condition is required for that. The first thing. Second thing, why this is called outer transition? What is the meaning of this outer transition? Because transition of D block elements takes place between two different cells. That's why this is called outer transition. Two different cell or orbit. The one electron goes into third to fifth like that. इस वजह से होता है. But another term is inner transition. So what is the difference between outer and inner? D block element is outer, but another term is inner. What is the meaning of inner? When transition takes place within the cell, but different subcell. Cell number same होगा, but subcell number अलग अलग होगा. So that's why this is called inner transition, like F block element. जो मैंने अभी आगे इसके बाद यही करवाऊंगा. F block element is called inner transition element. Understand? Divesh? Okay. Yes sir. Outer ट्रांजिशन उन्हें कहते हैं जो जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल टू शेल में एक्सचेंज कर सकते हैं, और सर इनर ट्रांजिशन उन्हें कहते हैं जो कि सिंगल शेल में ही अलग अलग सब शेल्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। राइट अब समझ में आया। यस पारस सर, मोर देन वन कलर और मोर देन वन वैलेंसी इसी वजह से होती है क्योंकि यस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। यस
ओके बात सर। करेंगे, अभी बात करेंगे डी ब्लॉक में भी और क्या क्या प्रॉपर्टीज। अभी तो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल पता है। लो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इसी का, सॉरी कशिश, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, हैंड रेज कर देना, ओके दैट्स फाइन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक, दैट इज, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। D block elements and their compound exhibit color. Generally word add कर दो, not in every case, generally exhibit color due to presence of unpaired electron. Unpaired electron होने की वजह से कलर शो करता है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रीजन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ एक और सपोर्ट देना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, because electron absorbs energy in visible region during transition. क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। So that's why there are two category here. Configuration D1 to 10, sorry 1 to 9, that will be colored होगा वो। और if you think D0 and D10 no unpaired electrons, that will be colorless, वो colorless होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी चेक करके यू कैन से कि ये कलर्ड है या कलरलेस है। ये कुछ पार्ट आपका समझो कि 12th का हो रहा है, बट 11th में भी है, इसलिए मैं करवा दिया। ये सान्या जैन। सर आप रीजन दोबारा समझा दो और थोड़ा सा प्लीज बड़ा बड़ा लिख दो, राइटिंग समझ नहीं आ रही है। ओके ओके ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए बेटा, मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने बताया फॉर द कलर फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर कलर फॉर्मेशन। क्या क्या कंडीशन होगा। द फर्स्ट, देयर आर टू कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज D1 to 9. D1 to 9 means have unpaired electron. Unpaired electron होगा। और सेकेंड इज D0 और D10, no unpaired electron। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, नो ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। और whenever transition takes place, electron absorbs energy, this line absorbs energy in the visible region during transition. Or whenever it absorbs energy, that means color formation takes place. ये colored होगा और ये colorless होगा। This is all about the colored and colorless, the condition. Okay. Now take the screenshot, कशिश। आगे बढ़ते हैं। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है इसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में हम बताते रहेंगे, तो आप सुनते रहेंगे। और वो आपको वैसे भी 12th में करना है, तो रेस्ट हम 12th में करेंगे। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज द F block. I am talking about F block element. What is F block? Last electron goes into F orbital. Very simple. Configuration से पता चलेगा। All are metal.
सबके सब मेटल होंगे. एंड नेक्स्ट वन इज इंक्लूड्स, क्या इसमें आता है? इंक्लूड्स actinoid and lanthanoid, actinoids and lanthanoids. These are the different. 1 minute, hold down. 1 minute hold करो बेटा. Okay, coming back. Now second one is all are metal, और इसमें actinoid is all are radioactive. All actinoid series elements are radioactive. ये आपको दिमाग में रखना है. These are F block. F block का rest all properties will be same as the D block, like it imparts color. ये कलर फॉर्म करेगा. उसके बाद और क्या प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताया है. जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दो इसका. जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 N-1 D0/1/2. This is the oblique, not 1 0 to 2. And then N-2 F1 to 14. इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा किसी भी F ब्लॉक एलिमेंट्स का, लाइक सीरियम 58 एटॉमिक नंबर, किसी का भी लिखो तो ऐसा ही लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन आएंगे. 1s2 से स्टार्ट करोगे तो आप लिख के देखना. दिस इज ऑल अबाउट द F ब्लॉक. बोर्स पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसने फीचर्स बताया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आगे बात करते हैं. हमारे पास 1-2 मिनट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज डन. ओके, आई होप यू हैव टेकन. और अटेंडेंस का भी स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज टाइम काफी हो चुका है. नेक्स्ट वन और लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज साइमन्स पीरियोडिक टेबल. साइमन्स पीरियोडिक टेबल. यस दिवेश. सर एनसीईआरटी में साइमंस वाली है पीरियोडिक टेबल? नो नो, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. नॉट बोर्स, बोर्स भी नहीं है. बट इन द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी में इन दोनों का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है. दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? वहां पर सिर्फ आपको इतना ही बता दिया जाता है कि दिस इज मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. तो यू फील दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट की मोस्ले ने ही सारा काम किया था, बट नॉट मोस्ले ओनली. मोस्ले ने फ्रेमवर्क तैयार किया ऑब्वियसली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर जो ब्लॉक देखते हो आप, वो ब्लॉक लिखा हुआ है बोर्स का. और दूसरा चीज आप एक और चीज देखते हो जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ साइमन्स पीरियोडिक टेबल में. व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी. ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी. अभी जो मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई है, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन, वो सब साइमन्स का दिया हुआ है. द फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. यस कशिश. सर मेरा भी नेट चला गया था तो लास्ट स्क्रीन मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ब्लॉक वाले का. आपके पास है क्या उसका स्क्रीनशॉट?
कोई बात नहीं, मेरे कंप्यूटर में ऑटो सेव हो जाता है स्क्रीनशॉट, तो आप अगर किसी का भी स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। सर बस ये लास्ट स्क्रीन वाले का कर देना आप सेंड, एफ Okay. ब्लॉक वाले का, इसका मैं अभी ले लेती हूँ। Okay. On the basis of reactivity, the first one is representative element. Representative element. What is representative element? The reactive element is called representative. Very reactive element is called representative element. This is very reactive. और कौन सा इंक्लूड होता है? It includes S block as well as P block elements. तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे लिखा हुआ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और वो S ब्लॉक और P ब्लॉक को इंडिकेट कर रहा होगा. The second one is outer transition element. Outer transition element. अभी मैंने बताया इसके बारे में, but this is moderate reactive. Not moderate reactive, or outer transition is D block element. And last classification, last category, that is inner transition. ये सब आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा. Inner transition element, it is least reactive. ये सबसे कम रिएक्टिव होता है. That is F block element. Right? This is all about that. This is Simon periodic table. Yes, Paras. सर एफ ब्लॉक के अंदर तो रेडियो एक्टिव आते हैं ना, तो उसको हम लीस्ट रिएक्टिव कैसे कह सकते हैं? इसीलिए तो रिएक्टिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली केमिकल रिएक्टिविटी, नॉट रेडियो एक्टिविटी इज नॉट रिएक्टिविटी. दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन. जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन बहुत कम करते हैं. राइट? ओके सर. क्या कह रहे हो बताओ. सर वो पहले से रेज हैंड हुआ पड़ा होगा, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट. Okay. Done. और take the screenshot of attendance also. और हम बाकी Okay, नेक्स्ट sir. क्लास में 12 o'clock डिस्कस करेंगे. Okay everyone. Thank you very much.